We are happy to have with us today our beloved Chairman and Managing Director LCA, Sri C.V. Ananthakrishnan. Now, I would request Ms. Ujjwala to welcome our CMD with a bunch of flowers. I request Ms. Arpita to welcome our guest, Deputy Chief of the Air Staff, Air Marshal Ashutosh Dixit, EVSM PM, with flowers. अब मैं श्रीमती गीता से अनुरोध करती हूँ कि वे फूलों से हमारे विशिष्ट अतिथि डायरेक्टर जनरल एरोनॉटिकल एजेंसी डॉक्टर गिरीश एसपीओ जी का स्वागत करें। अब मैं मिस अलीजा से अनुरोध करती हूँ कि वे फूलों से हमारे सम्माननीय अतिथि सी सेमिनार श्री EPDS प्रसाद जी का स्वागत करें। I request Ms. Arpita to welcome our Chief Executive Officer, Bangalore Complex AGN, Sri Mehar Kanti Mishra sir, with a bunch of flowers. किसी भी आयोजन के पहले सकारात्मक ऊर्जा के लिए हम दिव्य ज्योति का प्रज्वलन करते हैं। आइए हम सभी उस अलौकिक और अदृश्य शक्ति को याद करें। With these words, I would like to request our esteemed dignitaries to kindly light the auspicious lamp. Sir, please. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for the auspicious proceedings which are beginning. दीप जल चुका है, मन का अंधेरा छट चुका है। अब उज्जवल मन से हम नमन करेंगे परमपिता परमेश्वर का। उन्हें याद करते हैं व उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह अपनी असीम अनुकंपा हम पर बनाए रखे। मैं प्रार्थना के लिए श्री शिवशंकर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उनका साथ देने के लिए श्री श्रीराम मूर्ति जी वाद्य यंत्र पर हैं। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशलीलाय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रवेशाय धीमहि एकदन्ताय
धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीरमणाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गन्धहीनाय गन्धदेवाय गीतलीनाय लीलाशनाय गीतवादपटवे गीतचरिताय गायकाराय गन्धर्वविरचिते गायकाभिनविग्रहाय गङ्गाधरप्रणतवते गौरी सनन्दनाय गौरी हृदयनन्दनाय गौरवानुसुताय गौरी गणेश्वराय गौरी प्रणयाय गौरी रमणाय गौरवाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोवरुणाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीरमणाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश माइंड तभी आते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, आप जिद पर अड़ो तो सही। LCA तेजस ट्विन सीटर विमान ये हम भारतीयों की जिद और अथक प्रयास का ही परिणाम है। हल्का लड़ाकू विमान तेजस हर भारतीय के दिल में एक विशेष स्थान रखता है। ये न केवल एक विमान का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि हमारे देश की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, हमारी तकनीकी प्रगति और हमारे अटूट दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। 2 सीटर, फ्लाई बाय वायर, उड़ान नियंत्रण, हेड अप डिस्प्ले, ग्लास कॉकपिट, अत्याधुनिक राडार से लैस, विभिन्न प्रकार के मिसाइल ढोने में सक्षम ये एक छोटा और हल्का मिलिट्री रोड सुपरसोनिक फाइटर एवं ट्रेनर जेट है। इस एकल इंजन कंपाउंड डेल्टा विंग ट्विन सीटर विमान को DRDO, CSIR, सेमिलैब, DGAQA, अदर इंडस्ट्री पार्टनर्स एंड अकादमिया हमारे इंडियन एयरफोर्स के साथ प्रमुख साझेदार के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा विकसित किया है। ये सिर्फ विमान ही नहीं, बल्कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर हमारे देश की यात्रा का प्रतीक है। देवी सज्जनों, जैसा कि हमारे देश की परंपरा है, अतिथि देवो भव। आज इसी क्रम में मैं HAL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री CV अनंत कृष्णन जी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। Chief of Air Staff, Air Chief Marshal, Air Chaudhary, PDSM, ADSM, PM, ADC, and other esteemed dignitaries on the dais and off the dais. Very good morning to all of you. It gives me immense pleasure and pride to welcome you all for this memorable event of handing over ceremony of LCA Tejas twin-seater to Indian Air Force. We are privileged to have Honorable Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt ji
with us today, who has consented to be the chief guest of today's historic function, we set to make into the annals of history. When we approached Honorable RRM for gracing the event, despite his busy schedule, he has immediately consented for this prestigious event. Sir, I, on behalf of HAL fraternity and on behalf of all who gathered here to participate in the function, extend a very warm welcome to you. Your presence here today inspires the entire HAL family to perform better. As Father of Nation Mahatma Gandhi ji famously said, a customer is the most important visitor in our premises. We at HAL live by this adage day in and day out. We are very proud of Indian Air Force for the contributions towards defense preparedness of our country. We are delighted and honored with the presence of Chief of Air Staff, Air Chief Marshal B.R. Chaudhary, PVSM, AVSM, VM, ADC, who has kindly agreed to receive the first LCA Tejas twin-seater on behalf of Indian Air Force. Indeed, it's an honor to have you, sir, on this very special day here with us. On behalf of HAL, I extend a very cordial welcome to you, sir. We are also delighted to welcome Deputy Chief of Air Staff, Air Marshal Asutosh Dikshit, AVSM, VM, VSM for gracing the occasion. He has been a source of continuous support and encouragement for all of us. I would also like to place on record our appreciation for Southern Air Command and would like to welcome SMSO, SAC, AVM Atul Garg, VSM for this event. It is with the wholehearted support of Aeronautical Development Agency, who is a nodal agency for the development of this prestigious indigenous aircraft, that it's become possible to achieve this feat. To strengthen the relationship and reiterate our cooperation, we have Dr. Girish Devdere, Director General of ADA, for this event with us. We welcome you, sir. And also, we have among us Shri Jitendra J. Yadav, Program Director, Combat Aircraft and Director ADA, whom we consider as part of HAL and is instrumental in bringing LCA Tejas program to being a creditable national program. Certification of an indigenous design is a challenge given the fact that India is currently beset with first generation designers. Achieving unprecedented performance would not have been possible without the active and continuous support of SEMI. I am delighted to welcome Shri AP V.S. Prasad, Chief Executive of SEMILAC, for your graceful presence on this occasion. Behind each aircraft delivery, there is a team of professionals of DGAQA who have upheld the highest standards of aeronautical quality assurance. Their expertise, rigorous inspections, meticulous documentation, and unwavering commitment to maintaining the highest quality standards have been instrumental in making today's achievement possible. I am delighted to welcome Shri Iftikhar Ahmed, ADG DGAQA, for gracing the occasion. Self-reliance is the key for security of the nation, and India's defense sector is witnessing a significant wave of indigenization as a part of Government of India vision of Atmanirbhar Bharat and Make in India. We have made significant progress in achieving self-reliance in the helicopter segment with indigenous products catering to the various needs of our armed forces. The range of helicopters, starting from Cheetah Chetak, ALH, then ALH WSI version, light combat aircraft, helicopter Prashan, light utility helicopter, and future programs of IMRH and DBMRH showcases a strong self-sufficiency and defense capabilities. With today's event,
we are moving one step closer towards achieving self-sufficiency in fixed-wing trainer segment and furthering our quest towards developing indigenous fighter leading trainer. These fixed-wing trainers like HTT-40, Kiran Mark II, and AJT Hawk for rookie pilots is a crucial step in pilot training and skill development. These trainers help prepare pilots for more advanced and supersonic fighter aircraft. The addition of the LCA, Tejas twin-seater trainer, is a significant development as it bridges the gap between transonic AJTs and supersonic fighter aircraft, ensuring a smooth transition for pilots. The developments of a complex supersonic aircraft like the Light Combat Aircraft Tejas is a testament to the collaborative efforts and capabilities of India's defense manufacturing ecosystem. The LCA Tejas program is a shining example of India's commitment to developing advanced military technology indigenously. The LCA Tejas program involves the cooperation of various agencies, organizations, and institutions across the country. More than 400 Indian business partners are involved in the development of the LCA Tejas Mark I twin-seater trainer. It brings together the expertise of scientists, engineers, and technicians from the Defense Research and Development Organization DRDO, Hindustan Aeronautics Limited, and other government and private sector entities. The confidence that our esteemed armed forces have placed on HAL and the capabilities of our products is a significant source of pride and responsibility. HAL, being the OEM of LCA Tejas aircraft, is committed to deliver all the twin-seater aircraft pertaining to IOC and FOC contracts to IAF in the current financial year. Further, the design activities for Mark 1A LCA are progressing quite well, and production activities have also commenced, and the deliveries are planned from February 2024. The production facilities at HAL have been augmented from 8 to 16 aircrafts per year, and further to 24 aircrafts per annum is also underway. The additional capacity is created at Bangalore with a new division spread across 35 acres in area with built-up area of almost 25,000 square meters. HAL also is further augmenting the production capacities for LCA Tejas in anticipation of future orders with creation of an additional production lines at HAL Nasik division. The additional line at Nasik division, production rate is planned to be enhanced from 16 to 24 aircrafts per annum. In addition to further augment the defense manufacturing ecosystem in India, HAL will play a lead integrator role and would be open to invite private players for utilization of existing HAL facilities under the insourcing model. I take this opportunity also to place on record our sincere gratitude to our Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh Ji, who has been a staunch supporter of indigenization and has encouraged Indian industry at large and HAL in particular. It's with his continuous guidance and encouragement that we are able to come out with credible indigenous products. I would also like to thank Shri Giridhar Aramani, Defense Secretary, for his continued support and encouragement to HAL, which has been a real motivating factor to all HALites. At last, today's memorable event would not have been possible without the sustained support from Ministry of Defense, Indian Air Force, ADA, DRDO Labs, Semilac, DGAQA, other public sector undertakings, industry partners, including various MSMEs. I am glad that we have the talent, skill, and attitude, which is a testimony for today's historic function. I welcome my fellow HALites who have been working relentlessly to produce the first LCA, a twin-seater, by overcoming all the hurdles which came their way with determination and everlasting enthusiasm. HAL is committed towards defense preparedness of the country and would continue to support the Indian Air Force to maintain the security and sovereignty of the country. I once again take this opportunity to welcome you all for this function. Jai Hind. Thank you so much, sir, for such a warm welcome note.
With you, all of us are elated today to cherish this moment in the history of LCA. एक सपने की शुरुआत, प्रगति की ओर एक कदम और एक ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे वह आ गया है। इस अभूतपूर्व क्षण पर हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम, एडीसी की गरिमामयी उपस्थिति हमें प्राप्त हुई है। आज इस अवसर पर हमारे माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी ने मुख्य अतिथि बनकर हमें गौरवान्वित किया है। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री देवर जी के कर कमलों द्वारा अत्याधुनिक LCA तेजस ट्विन सीटर LT-5201 विमान को देश के प्रति समर्पित करने के लिए उन्हें आमंत्रित करती हूँ। प्लीज। Come fast. The strong legacy of LCA Tejas. As Tejas combat trainer soars into the skies, our billion heartbeats take flight. Aircraft build up. Study of production drawings. Loading of parts. Detailed parts manufacturing. Front, center, and rear fuselage manufacture. Wing manufacture. Structural assembly. Equipping. RFTs. Engine ground run. Taxi test. Flight tests. Acceptance for induction. The many stalwarts who have flown HAL Tejas training, Chiefs of Air Staff, Chief of Defence Staff, Foreign Air Forces, prominent personalities, Raksha HAL Tejas short training, gentle flying, tactical flying, night flying, combat training, academic weaponry, large force engagements, live fighting, and frontline combat missions. Aerospace and defense. Hindustan Aeronautics Limited Force behind the forces. देवी और सज्जनों, एक बार फिर जोरदार तालियां, क्योंकि हम इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। इस क्षण में सावधानी पूर्वक योजना और प्रयासों को जीवंत होते हुए देखना वास्तव में उत्साहजनक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Now,
Aeronautical Development Agency (ADA) was established under the aegis of Defense Research and Development Organization to manage LCA program. The ADA was entrusted with the design and development of LCA, while HAL was chosen as the design cum production partner. This feat has been possible to achieve with the wholehearted support of Aeronautical Development Agency, who are the nodal agency of the development of prestigious indigenous aircraft. Now, I would humbly request our esteemed guest, Director General ADA, Dr. Girish S. Devdhare sir, to kindly address the gathering and fuel us with your ideas and inspire our zeal. Sir, please. Honorable Raksha Rajya Mantri, Shri Ajay Bhai, Chief of Staff, Air Marshal PVSM, AVSM, VMC, all dignitaries on the dais and off the dais, and my colleagues, good morning. Today is a very important day when the first twin seat variant of the indigenous light combat aircraft is being delivered to the Indian Air Force. It marks another step towards achieving Sampurna Atmanirbharta for fighter aircraft development in this country. The twin-seater is an outcome of tireless efforts of an integrated team of designers, engineers, technicians from ADA, HAL, numerous DRDO laboratories, CSIR laboratories, private industries, and academic institutions. That this development would not have been possible without the wholehearted support from Indian Air Force, along with CEMILAC and DGAQ. The twin-seater variant, SPT, is much more than just an advanced trainer. It certainly is an excellent platform for training the new pilots for flying the single-seater aircraft in the squadron. However, the SPT aircraft is a fully capable combat aircraft in its own right. It has the same weapon and sensor suite as the single-seater aircraft, and has the same software as well. The utility of the twin-seater Tejas is enormous in the emerging battlefield. With the advent of extensive network-centric operations, the twin-seat fighter aircraft can be used to command and operate a swarm of unmanned assets by one of the pilots, and the other pilot can steer the aircraft to take out and defend itself from other adversaries. Today is a triumph for the vibrant aerospace ecosystem in the whole country and provides a catalyst for it to flourish further. Thank you and Jai Hind. Ladies and gentlemen, now we have come to the most awaited segment of today's event, the handing over ceremony of Release to Service Document, RSD. Center for Military Airworthiness and Certification, CEMILAC, is a regulatory body under Defense Research and Development Organization, vested with responsibility of airworthiness certification of military aircraft, helicopter, unmanned aerial systems, aero engines, air-launched weapons, and other airborne tools. The RSD is a document issued by CEMILAC to the services during operational clearance of an air system that authorizes regular flying by the services within the stipulated limitations and cleared envelopes. Release to service document shall be the basis of operation of air system by the user services. The airworthiness authorities, that is CEMILAC, have a major role to play in each of the defense product lifecycle stages. In ab initio development, the activities center around the demonstration of design safety standards by design evaluation, analysis and simulation, ground and flight testing, and quality assurance. This marks the operation clearance, which culminates in release to service document issued to the user to facilitate operations and to ensure airworthiness throughout the life cycle of the air system. The RSD document released for LCA is the result of dedicated and tireless efforts put in by ADA, HAL, flight test agencies under the vigilant regulatory framework of CEMILAC and DGAQA. Now, I would humbly request CE CEMILAC, Shri APVS Prasad,
to come forward and hand over the release to service document. I would humbly request SMSO Southern Air Command Air Vice Marshal Atul Garg, VSN, to kindly come forward and receive the RSC of LCA Tejas aircraft on behalf of Indian Air Force. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, now coming to the next segment, handing over of Signal Out Certificate. This is a certificate of airworthiness issued by DGAQA to each air system manufactured by the main contractor conforming to RSP. This regulation emphasizes the need of establishing compliance to approved baseline configuration, carry out acceptance tests to ensure performance requirements, and subsequently issue a SOC for an airborne flow. Production of LCA twin-seater has been very challenging, but our diligent workforce has rose up to the occasion and achieved SOC for the first series twin-seater LT5201 on 30th of September 2023. As we are aware, LCA Squadron is operational at Sulu under Southern Air Command, and induction of these aircraft will enhance the power of our existing fleet. I request now, on behalf of DGAQA, ADC AQA South Zone, Mr. Iftikhar Ahmed, to kindly come forward and hand over the Signal Out Certificate. I humbly request to Deputy Chief of the Air Staff, Air Marshal Ashutosh Dikshit, AVSN BMVSN, to come forward and receive the SOC on behalf of Indian Air Force. Please give a big round of applause. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, it's time to hand over our first twin-seater to the Indian Air Force. There cannot be any other better occasion for handing over the aircraft to the Chief of the Air Staff, who is with us today in spite of his busy schedule. The entire support of our Indian Air Force under the leadership of Chief of the Air Staff is praiseworthy. Valuable inputs have always guided us to improve our product. This handing over ceremony of our twin-seater LCA is a historical milestone of the LCA program. So, I would kindly request our Chairman and Managing Director, Shri C.V. Anantkrishnan, to please hand over first LCA Tejas twin-seater to Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal B.R. Chaudhary. I would humbly request our honorable guest, Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal B.R. Chaudhary, PBSL, ABSN, PMADC, sir, to please address the gathering with his captivating words. So please. Honorable Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt, CMD HL Shri Anand Krishnan, DG ADA Girish Devdare, C. Semilai, CEO Bangalore Division, all the stakeholders who have made this
momentous day possible. Good morning to all of you, and my heartiest congratulations to each one of you for writing a new chapter in the history of Indian aviation industry. Indeed, today is a very momentous day and a matter of pride for me to accept the first two-seater LCA aircraft. This day will go down in history as a really remarkable one that exemplifies the prowess of the Indian domestic aviation industry. My compliments to each one of you here and those who are not present, who have been working behind the scenes, and those who are no longer in service today but who have initiated this program. My heartiest compliments and congratulations for the excellent work that you've done. Again, it's a matter of pride for us in the Indian Air Force, having set up the two LCA squadrons already. We have now signed the contract for 83 additional LCA, and we are moving forward to procuring 97 more LCAs. In the coming years, we will have a fleet of 220 LCAs in the inventory of the Indian Air Force. It goes without saying, it's a matter of pride not only for us who serve in the Air Force, but for the entire Indian industry, for all those who have made this possible. And once again, I wish each one of you all the very best to ensure that we in the Indian Air Force receive our aircraft on time and we start flying them in good period of time. Once again, my compliments to all the stakeholders and best wishes to all of you for a very bright and successful future. Thank you and Jai Hind. Thank you so much, sir, for recognizing collaborative efforts of all stakeholders in this LCA program. Your appreciation means a lot to us and it really lifts our spirits and commitment. Thank you so much, sir. हमारे देश के रक्षा क्षेत्र के सशक्तिकरण में रक्षा मंत्रालय का सहयोग अभूतपूर्व है। जो विश्वास एवं प्रोत्साहन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवं तेजस प्रोग्राम को रक्षा मंत्रालय द्वारा प्राप्त हुआ है, उसके हम सदैव आभारी हैं। 83 मार्क 1 विमान के ऑर्डर ने हमारे दृढ़ निश्चय को और मजबूत किया है एवं हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित किया है। इसी श्रृंखला में अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी से निवेदन करती हूं कि आप अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। सर प्लीज। भारत माता की, भारत माता की। इस बहुत ही ऐतिहासिक अवसर पर जो यहाँ उपस्थित हैं, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल चौधरी जी, श्री अनंत कृष्णन जी CMD HAL, डॉक्टर गिरीश S देवधरे जी महानिदेशक ADA AOA, श्री APVS प्रसाद जी मुख्य कार्यपालक सेमिलैक, उप वायु सेनाध्यक्ष DCAAS एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी DCAS, वैज्ञानिक गण, सभी लोग जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, विशेषज्ञता रखने वाले, हमारे सभी कर्मयोगी, टेक्नोक्रेट, मीडिया के प्रतिनिधिगण
और देवियों और सज्जनों, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में यहां होना मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। आज पुनः इतिहास रच गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा, और जिसके अभी एग्रीमेंट हुए हैं, सारे एग्रीमेंट का मैं साक्षी हूं। दुनिया तो उथल पथल होती रहती है, लेकिन ये बड़ी स्थायी चीजें होती हैं। जब कभी इतिहास बनेगा, सीएमडी कौन थे, एयर चीफ कौन थे, और जितनी डिग्निटरीज हैं कौन कौन बैठी थी डाइस पर और कौन कौन उपस्थित थे, ये रिकॉर्ड होता है। तो उसमें आएगा कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से रक्षा राज्य मंत्री भी उपस्थित रहे। ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। ये हल्की बात नहीं है, कोई छोटी बात भी नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है कि आज हम यहाँ सेना को LCA तेजस के ट्विन सीटर की पहली श्रृंखला उत्पादन की सुपुर्दगी के साक्षी हुए हैं। एक एविडेंस के रूप में हम आज उपस्थित हुए हैं। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो हमारे स्वदेशी एरोस्पेस उद्योग के कौशल को दर्शाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करती है। आप सब जानते हैं, एक समय ये था कि हम दूसरे लोगों पर डिपेंड होते थे, और ये निश्चित जानिए, चाहे कोई प्रतिष्ठान हो, चाहे परिवार हो, या कोई दुकान मान लीजिए, अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, चाहे परिवार हो, तो वो परिवार डगमगा जाते हैं और बिखर भी जाते हैं। तो जिस तरह का मैनेजमेंट हमने आत्मनिर्भरता के लिए किया, आपने कई बार सुना होगा कि कंकड़ तोड़ने वाले का बेटा, बेलचा लगाने वाले का बेटा, मजदूरी करने वाले का बेटा IAS निकल गया। और कई बार आपने सुना होगा बहुत गरीब के बेटे ने इस साल के CDS टेस्ट को पास किया है, जो पास हो गया है, हिमांशु पांडे। पिता गरीब थे लेकिन पीढ़ियां सुधर गई, वो भी इंडिजिनस होके, आत्मनिर्भर होके, पैरों पर खड़े हो गए। जब IAS के बनने के बाद, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, रिक्शा चलाने वाले के बेटे आए, तो एक से एक बड़ी जो कारें थी विदेशी, उनको लेकर उनको रिसीव करने के लिए आए। यार मेरी कार में बैठो, कम हियर, हम तुम्हें लेने आए हैं। तो उनके पिता बहुत पीछे चले गए कि जो हमें धमकाते थे, जिनके सामने हम कुछ है ही नहीं, मेरा रिक्शा है मामूली 2-3 हजार का, और बेटे की शान में मैं कहीं से कमी नहीं लाना देना चाहता हूं, क्योंकि लोग कहेंगे रिक्शे वाले का बेटा है। लेकिन संस्कार क्या होते हैं, जब इंडिजिनस होता, आत्मनिर्भर होता, संस्कार भी साथ चलते हैं। बेटे ने कहा, पापा कहाँ गए, पिताजी कहाँ चले गए? तो कोई बगल में खड़ा था, उसने कहा वो पीछे हैं। तो उसने कहा, अरे पापा इतने दूर क्यों खड़े हैं, आइए ना, यहाँ आइए। तो दोस्त समझ रहे थे कोई मेरी गाड़ी में बैठेगा, एक से एक बड़ी गाड़ियां लेके आए थे, करोड़ करोड़, 2-2 करोड़ की। उसने कहा, ओके फ्रेंड्स, टुमारो वी विल मीट, बाय। पापा चलाइए, रिक्शे में बैठे और चल पड़े। इतनी मेहनत करी पापा ने, बेटे को IAS बनाया, आज दुनिया में नाम है, पीढ़ियां सुधर गई। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आप कर्मयोगी हैं, आप टेक्नोक्रेट हैं, आप विश्वकर्मा हैं। HAL ने जो मेहनत करी है, जब से HAL का जन्म हुआ है, उस इतिहास को देखिए, आज इतिहास बदल दिया है। अभी चौधरी साहब ने बताया कि हम कितने खरीदने जा रहे हैं हेलीकॉप्टर। इसलिए मैं हृदय से आप लोगों को बधाई देता हूं, और HAL के तमाम स्टाफ को, CMD साहब, आप और इंक्लूडिंग ऑल द स्टाफ ऑफ योर, जितने भी आपकी शाखाएं हैं, यहाँ है, लखनऊ है, या जहां जहां पर भी हैं, अन्य साउथ में हैं, कि आपने भी इतिहास बना दिया।
जो माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ें, इंडिजिनस हो। आज देखिए विश्व में क्या है, हमारी इज्जत कितनी बढ़ गई है। सब लोग भारत भारत मोदी मोदी बोलते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट इतना पुख्ता हो रहा है कि आप जानते हैं कोई क्षेत्र पीछे नहीं है। और उसमें आज हाथ लगा दिए हैं HAL ने। एक इतना बड़ा एग्रीमेंट अभी आपने देखा एयरफोर्स के साथ हुआ है। ये हिस्ट्री अविस्मरणीय रहेगी, इसे भूला नहीं जा सकता है। और सब इसके लिए इतिहास में आपके नाम भी दर्ज हो गए हैं, क्योंकि जीवन तो छोटा सा है। तू लाख कमा ले हीरा मोती, याद रखना कफन पर जेब नहीं होती। याद वही किए जाते हैं जो इस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें भूला नहीं जाता है। इसलिए छोटे से छोटा स्क्रू को चलाने वाला, रिंच चलाने वाले कर्मयोगी से लेकर आप टेक्नोक्रेट, इंजीनियर्स, सारे लोग और आपका एडमिनिस्ट्रेशन, मैं इनको सैल्यूट करता हूं। आज इतना अच्छा आपने काम किया है, देश को नई दिशा दी है। हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, लगातार और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, करीब 2 डिकेड पहले जो अटल जी ने नाम दिया था तेजस, वो फलीभूत हुआ। एरो इंडिया में मुझे भी आने का सौभाग्य हुआ पिछली बार। मुझे बेहद खुशी हुई कि चौधरी साहब जो हमारे बैठे हैं, जब उड़ा रहे थे तब हम देख रहे थे ऊपर किस तरह से तेजस को उड़ा रहे हैं। कितनी खुशी होती, गदगद होते हैं। यानी कि हमारे कितने ऊपर चले जाएं हम लोग, लेकिन उसके बाद भी जब कहीं पर भी विपत्ति आती है तो हम खुद भी कमान संभाल सकते हैं। ये संदेश था उसमें, सारे पायलट के लिए संदेश था जब हमने उसको देखा। तो इसलिए मैं आज बहुत गदगद हो गया, आपको बधाई देता हूं। ये हमारी दशकों पहले प्रारंभ की गई यात्रा में LCA तेजस कार्यक्रम का अथक समर्पण और नवाचार अत्यंत प्रेरणादायी हम सबके लिए है। विश्व स्तरीय स्वदेशी लड़ाकू विमान से युक्त हमारी भारतीय वायुसेना को लैस करने के स्वप्न को लेकर LCA तेजस विमान के विनिर्माण की नींव रखी गई थी। यह एक ऐसा सपना था जिसे कार्यक्रम की शुरुआत में कई लोग बहुत महत्वाकांक्षी मानते थे, लेकिन मेहनत, लगन, समर्पण जो हमारा था, डेडिकेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसीज, ADA, DRDO लैब्स, सेमिलैक, DGAQA, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, भारतीय वायुसेना तथा और अनगिनत अन्य संस्थानों के कर्मियों और व्यक्तियों, जो मैंने कहा था कि आप बहुत बड़े कर्मयोगी हैं, आप सबके द्वारा, आपके प्रतिष्ठानों के द्वारा इस कार्यक्रम को अपना योगदान देकर सिद्ध कर दिया कि जब कभी देश हित में सर्वोपरि होता है तब कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और फिर सभी संस्थान इस महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए एकजुट हो जाते हैं। उसका परिणाम आज ट्विंस आपके सामने में हमारा जहाज जो फाइटर है दिखाई दे रहा है, ये उसी का परिणाम है। इस विकास से हमारे देश ने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान तैयार करने की न केवल बेहतर जानकारी प्राप्त की, बल्कि एरोस्पेस इकोसिस्टम को और भी विकसित एवं पल्लवित किया है। LCA तेजस के विकास ने भारत के रक्षा और एरोस्पेस उद्योग को सशक्त बनाते हुए गति प्रदान की है। इसने अनगिनत छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों, अनुसंधान संस्थानों और कुशल श्रमिकों के लिए अवसर पैदा किए हैं, जिन्होंने इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं में अपना योगदान एक कर्मवीर, कर्मयोगी की तरह से दिया है। LCA तेजस की यात्रा अदम्य भावना, कई प्रकार की चुनौतियों से निपटने तथा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता की सीमाओं में सतत रूप से विस्तार करने का एक अद्भुत प्रयास रहा है।
LCA तेजस ने अपने प्रारंभिक डिजाइन और विकास चरणों से लेकर प्रचालन क्षमता प्राप्त करने तक के प्रयासों से यह सिद्ध कर दिया है कि भारत न केवल उन्नत मिलिट्री हार्डवेयर को उत्पाद करने में सक्षम है, बल्कि इसमें निरंतर सुधार और नवाचार को सुनिश्चित करने में भी पूरी समर्थ रखता है। LCA तेजस के विकास से रक्षा खरीद के प्रति हमारे दृष्टिकोण में भी महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इसने यह बताया है कि भारत के पास अपनी जमीन विश्व स्तरीय विमानों की डिजाइनिंग, विकास और विनिर्माण करने की प्रतिभा, ज्ञान और नवाचार की क्षमता भरपूर है। इसी भावना ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की भावना को प्रज्वलित किया है, जिससे और अधिक स्वदेशी विकास और उत्पादन करने के लिए एक बहुत बड़ा मंच हमारा तैयार हो गया है। मैं इस अवसर पर LCA तेजस विमान के अभिकल्पना और विनिर्माण में HAL, ADA, DRDO लैब्स, सेमिलैक, DG, AQA, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की टीमों और अनगिनत अन्य उद्योगों से संबंधित भागीदारों और व्यक्तियों द्वारा किए गए उल्लेखनीय प्रयासों की सराहना करता हूं और आपको बधाई देता हूं। आपने समर्पण, विशेषज्ञता और उत्कृष्टता के इस दिन को संभव करके दिखाया है। आपने न केवल एक विमान का निर्माण किया है, बल्कि इसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी बना दिया है। आपके इस कार्य ने न केवल हमारी भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को सशक्त किया है, बल्कि हजारों नौकरियां भी सृजित किए हैं और हमारे देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम को पोषित किया है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, एजिलिटी और बहुआयामी विशिष्टता से युक्त ट्विन सीटर की इस पहली उत्पादन श्रृंखला की सुपुर्दगी से LCA तेजस की यात्रा में एक नए अध्याय का प्रारंभ हुआ है। यह विमान पायलटों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण सुनिश्चित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह भारतीय वायुसेना की प्रचलन तत्परता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को परिचालित करेगा। मुझे यह एक बार फिर बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय वायुसेना ने HAL को पहले ही 83 LCA के लिए ऑर्डर दे दिए हैं, जो आपकी क्षमताओं और इस विमान के महत्व में हमारे विश्वास का पुख्ता प्रमाण है। यह आदेश हमारे सशक्त बलों को श्रेष्ठतम सुविधाओं से युक्त रखने की हमारी प्रतिबद्धता को सिद्ध करने के साथ साथ हमारे रक्षा उद्योग और रोजगार सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा हम भविष्य में आगे के आदेशों की संभावना के बारे में आशान्वित हैं। LCA तेजस कार्यक्रम ने अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया है और हमारा अनुमान है कि यह आने वाले वर्षों तक हमारी वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण संबल बना रहेगा। LCA तेजस विमान कार्यक्रम न केवल विमान निर्माण के बारे में, बल्कि यह हमारे राष्ट्र को सुरक्षित करने, नौकरियां निर्माण करने, नवाचार को बढ़ावा देने और एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भारतीय वायुसेना में बड़ी संख्या में LCA तेजस के शामिल होने से उभरती सुरक्षा चुनौतियों का जवाब देने की हमारी क्षमताओं में महत्वपूर्ण इजाफा हुआ है। यह सुनिश्चित करे कि हमारे पायलटों की पहुंच एक प्लेटफॉर्म तक हो, उन्हें अत्यंत परिशुद्ध और दक्षता के साथ हमारे देश की रक्षा करने में मदद करे। इसके अलावा यह उपलब्धि मेक इन इंडिया और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। मुझे इस बात का गर्व है कि सहयोगात्मक प्रयासों से हम ट्विन सीटर LCA तेजस को वास्तव में तैयार कर पाने में सफल हो सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह विमान भारतीय वायुसेना के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करेगा और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा संप्रभुता बनाए रखने में अपना
महती योगदान करेगा। मैं सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, टेक्नीशियंस और हर उस व्यक्ति का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने LCA तेजस कार्यक्रम की सफलता में अपना योगदान दिया है। आइए हम इस क्षण को न केवल किसी विमान का एक जश्न मनाने के लिए बल्कि भारत की भावना और हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का एक उत्सव मनाने के रूप में माने। इसी के साथ मैं आपकी अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आपको बधाई देता हूं। उत्तरों उत्तर प्रभु हमको इसी प्रकार की शक्ति दे। जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म के गुरुजनों से मैं प्रार्थना करता हूं, ऑलमाइटी से प्रार्थना करता हूं, जिस तरह आज हमारा देश फल और फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक बार हम बहुत कमजोर समझे जाते थे, कुछ भी नहीं समझे जाते थे विश्व के सामने। आज मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी उन्नति हो रही है। पूरा विश्व आज भारत की तरफ देखता है। कोई भी विजन आता है उस विजन को और पुख्ता करने में HAL ने जो आज कार्य किया है ये ऐतिहासिक है। पुनः मैंने पहली बार दोबारा मैं तिबारा आज HAL को यहाँ पर हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके स्वर्णिम शब्दों से हम सब में ऊर्जा का संचार हुआ। हम आगे और अच्छा करने के लिए प्रेरित हुए। जिस तरह LCA तेजस कार्यक्रम एवं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज तक अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, आने वाले वर्षों में भी हम आपके विश्वास पर खरे उतरते हुए भारतीय वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण संबल बने रहेंगे। हम राष्ट्र की सुरक्षा एवं संप्रभुता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री CB अनंत कृष्णन जी से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी को हमारी अथाह कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में स्मृति चिन्ह भेंट करें। सर प्लीज। I now request our CMD-HAL to kindly present a memento to our esteemed guest, Chief of the Air Staff, Air Chief B.R. Chaudhary, as a token of our immense gratitude. I now request our CMD-HAL to kindly present a memento to Deputy Chief of the Air Staff, Air Marshal Ashutosh Dixit. अब मैं CM अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे डेवलपमेंट एजेंसी डॉक्टर गिरीश एस देवधरे को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। अब मैं हमारे CMD-HAL से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे अतिथि सी सेमिलैक श्री
APVS प्रसाद जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। थैंक यू सर। इतना बड़ा आयोजन अथक परिश्रम के बिना संपन्न नहीं होता। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैंगलोर कॉलेज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड श्री मिहिर कांति मिश्रा जी से आए और आभार प्रदर्शन का यह क्रम पूर्ण करें। Heartiest greetings to all present here. Respected dignitaries on the dais, off the dais, ladies and gentlemen. Today's occasion indeed epitomizes the realization of one of HCL's most sought after and awaited event. This historic event has now marked an important milestone that gives impetus to move in a greater pace in the journey for India's self-reliance in aerospace and defense domain. We are honored to have among us Honorable Raksha Rajyamantri ji, who consented to grace the occasion as chief guest, giving priority over his other official commitments, though the event was scheduled in a very short time. This exemplifies the importance that is being extended as a mantralaya for all the indigenous projects with a motto of achieving the objectives of Atmanirbhar Bharat, the flagship program and the initiative government of India. I, on behalf of HA, extend our heartiest gratitude and sincere thanks to you, sir, for gracing the occasion. Kindly accept our highest regards for having spared your valuable time for today's inspiring address to all of us. Couple of days before, we celebrated Gandhi Jayanti. And as Mahatma Gandhi said, customer is the very purpose for which we are in the business, which is a great message by the father of our nation. We are fortunate enough to have with us the Chief of the Air Staff of Indian Airforce, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, PVSM, AVSM, VM, ADC, whose presence has instilled a deep sense of motivation in every HLite present here. So thank you for accepting our invitation and accepting first LCA twin-seater aircraft from HA. Certainly, we are honored by your presence on this momentous occasion. May I extend our deepest sense of appreciation and gratification to Air Marshal Ashutosh Dixit, AVSM, VM, VSM, DCS. Sir, the entire team HA is overwhelmed with your presence. Sir, we will never let you down. Your unwavering faith in our capabilities, skills, tested and trusted expertise at all times. We are highly obliged with your gracious presence, sir. To achieve this feat, there is immense contribution by ADA, and the relentless support for this program has made LCA twin-seater variant what it is today. I take this privilege to thank Dr. Girish Deodare, DG ADA, for gracing this occasion, sir. I would like to express our sincere thanks to CAPVS Prasad ji, Chief Executive Semilab, for your continuous support and for gracing the occasion. LCA is not a program of few individuals or an institution or of one single establishment.
It's the dream of billion Indians which has been transformed into reality. The umpteen number of resources at various institutions like MOD, Indian Airforce, HAL, ADA, SEMILAC, DGAQA, DRDO, DPSUs, industry partners, MSMEs, etc. And I take this opportunity to thank all those behind the scene who has worked towards this achievement. It's my pleasure to thank our Chairman and Managing Director, Sri C.V. Anand Krishnan sir, whose constant encouragement and support motivates the workforce of HA. At this juncture, I also thank the Board of Directors of HA for their enormous support and contributions. My vote of thanks would be incomplete if I missed to mention the efforts and dedication put in by every employee of the entire HL fraternity, with a special mention to AIDC and LCA Tejas division, who have been part of this journey leading to today's success. With deep sense of gratitude, I thank all the media and the camera professionals whose wide coverage can take the LCA twin-seater to each professionals of this country and in the world. I extend my sincere thanks to Facility Management Division, Airport Service Center, Security Services, and each one of those who are directly or indirectly involved in making this momentous occasion a grand success. Thank you. Jai Hind. जैसे आरंभ हुई हर चीज का कहीं न कहीं विराम होता है ताकि वो नई ऊर्जा के साथ शुरुआत कर सके।